Hi everyone and welcome to episode 4 of Art Journaling with me, that is Shweta. So first of all, I'm sticking a maths ki notebook wala paper on my journal book, and I'm also going to stick one in the middle of the book because that is where the book folds. So आज का journal spread is going to be very interesting, very simple as well, and I hope you guys like it. Then I'm taking a yellow tube color and with the help of a sponge, मैंने जो ये बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट होता है उससे I am spreading the color yellow. एंड देन अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड्स हैं या फूड से रिलेटेड मैगजीन्स हैं तो उसको यूज़ करना है. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. आई हैड सो मैनी रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड्स विथ मी एंड फूड मैगजीन्स. सो यू हैव टू कट द पिक्चर्स ऑफ द फूड. सो आज का जो जर्नल स्प्रेड है इज़ गोइंग टू बी अबाउट फूड. तो मैं ऐसे जो मेन्यू कार्ड्स हैं और जो मैगजीन्स हैं वहाँ से फूड की पिक्चर्स कट कर रही हूँ. कुछ राउंड शेप में, कुछ नॉर्मल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अलग अलग शेप्स में मैं कट कर रही हूँ. और मैं थोड़ी थोड़ी सी रेसिपी बुक में से रेसिपीज़ भी कट कर रही हूँ. और फिर आपको ये पूरा अपने जर्नल स्प्रेड पे अपने हिसाब से स्टिक करना है. और क्योंकि ये अलग अलग शेप्स में है तो ये बनने के बाद बहुत सुंदर कोलाज लगता है. So I'm just sticking it randomly onto my journal page, whatever floats my mind, whatever calls me, and with the help of a glue stick I'll keep sticking it. So once I was happy with my layout, I started sticking it with the help of a glue stick. This whole process is very therapeutic and it relaxes you a lot. It relaxes your mind. Once it is ready, I'm just going to take Fevicol and going to spread it all over the page. It will make the page thicker and will also help me to stick all the edges that were not sticking up well with the glue stick.
And finally, it's about the quote. So instead of writing the quote this time, I'm going to take the letters of the quote from the magazine. So I'm just going to cut the letters for the quote from the magazine. I'm not going to write this time. तो मैगज़ीन में से आप जो भी कोट लिखना चाहते हैं फूड से रिलेटेड, उसके जो लेटर्स हैं वो आप मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में से एक एक लेटर कट कर लीजिए. एंड देन उसको अपने जर्नल स्प्रेड पे स्टिक कर लीजिए. मैं जो लिख रही हूँ वो ये है कि थैंकफुल फॉर द फूड. सो कंसिडरिंग वी ऑल आर इनटू COVID kind of a situation, I'm just so thankful that I've got food on my table, I've got food on my plate. There are so many people जिनको खाने के लिए भी नहीं है, so I'm so thankful that I've got food on my plate. You can write any quote related to food at this moment. I just felt for this quote that I'm thankful for the food. और जो भी एक्स्ट्रा एजेस में पेपर था, आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट. फाइनली आई एम टेकिंग द येलो ट्यूब कलर अगेन एंड फिलिंग द बॉर्डर to make the border bit more darker. So I'm just spreading it with my fingers. Again, you don't need any paintbrush here, you don't need to be perfect. And then I'm taking a black tube color and dipping my paintbrush in it and just making like a dark border for the letters of the quote. This will help the whole quote to come out. वो उभर के दिखेगा. And that is it. The journal spread is ready after that, and I think it looks very beautiful, the whole food background with the magazine cutout quote. And I hope you like it. Please guys, subscribe to my channel. I'm making a video every week. Please subscribe and share it with your friends and family. Please leave a comment and tell me how you like it. I think it looked very beautiful in the end. Thank you for watching. Take care and please subscribe to my channel.